So, folks, back this Thursday, Saturday evening rather. I love this statement by Prime Minister. Dynastic politics a threat to healthy democracy. PM on Constitution Day. PM CJI stress need for the judiciary and government to complement each other. Dynastic parties threat to democracy, says PM. And what does NADA say? Boycott of event reflects Rahul's monarchical mentality, says NADA. Judicial intervention to nudge exec, not usurp its role, says CGI. Now here's the thing, right, folks? I don't think these guys are going on about dynasty, and politics being a threat to a healthy democracy. Let me just say, a Tanashahi party, a Tanashahi leader, a leader who basically has shackled almost all the principal pillars of democracy, which is the judiciary and the media. The judiciary under the Gogoi was the most shackled judiciary that I have seen, and also since one after that. It's only started humming since Ramanna has taken over, and hopefully with the next Chandrachud. Executive has been totally centralized. Nobody even gets up and debates the issue with the Prime Minister. It's the PMO that makes all the decisions. The Parliament is almost non-existent because of the huge majority on both sides. What happens is, in Parliament, everything is being passed through ordinance. That suggests, largest number of ordinances done under this government, that suggests that's not working either, right? In the dynasty, let's see, the two principal players in the dynasty, Nehru and Indira. Nehru actually created all these pillars of democracy and defended it with his life, allowing the opposition a voice, allowing the media to say whatever he wants. The first attempt to destroy democracy was made by Indira Gandhi, the emergency. And guess what? Again, the democratic pillars came out and whacked her left, right, and center. Now to say that this dynasty destroyed democracy is kind of stupid, and for bucks, just kind of, there's something good that was done by both Nehru and Indira Gandhi. Both had huge downsides, but the principles, the roles they played in the development of this country or the creating this country, especially during the times of Nehru, when actually in the 60s, not a single country in Western world thought India would survive as is, right? So, even when you're trying to downgrade the poor Congress, you run up against Indira Gandhi, and like this, for example, India marks 50 years of key battle before 1971 war with Pakistan. You can't do that without Bangladesh according and giving Indira Gandhi the prime of place. These guys may squirm, but that's reality, folks. President may visit Dhaka in December for Vijay Diwas celebrations. Guess who's responsible for this Vijay Diwas? Again, the leadership. Indira, you got it right, Indira Gandhi. And Rahul and all must run with this, right? Now, what do these guys have to say? At Jaywar, Modi and Yogi toast infra, roast opposition, and all they can talk about is Jinnah. What is Sambit Patra has to say? BJP, Rahul has a pathological hatred for Hindus, being a Hindu, kind of stupid. NADA continues with his life. NADA in Goa, opposition misled nation about vaccine, and nothing could be furthest from the truth. Farmers continue to hammer them. 500 farmers will reach Delhi on November 29 ticket, and did they reach? Of course they reached. It says, travels and travails. Farmers look back ahead, not losing sight of a final goal. Farmers at Tikri. UP gate springs to life as thousands gather, vow to continue their protest. So, both sides. The sword had a double edge. When they put on the Kanoons, Teen Kale Kanoon, they got humped with these solid Pradarshan. Now that they've given up, equally big Pradarshan's, right? And what does AAP say? AAP government will continue to back farmers, says Chief Minister. That's another problem. And what do we have? Like I said, BJP, Namaz disrupted as groups keep up stare. This is Gurugram. But Khattar is in trouble because this has got to have to do with something to do with the fact that he's uncertain about his position in Haryana, folks. Cheers. दोस्तों नमस्कार, मैं सूर्य प्रताप सिंह। आज का मुद्दा इतना अहम है कि भारतीय जनता पार्टी में हो क्या रहा है। भारतीय जनता पार्टी में जैसे डेस्परेशन होता है, वो पोजीशन है। आपको पता है, अभी 3 काले कानून वापस ले लिए कल मोदी जी ने। वो मोदी जो कभी झुकता नहीं था, वो बड़ा चेहरा, वो 56 इंच का सीना, वो लाल आंखें, वो और रूप जो लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है कि भाई इतना विराट स्वरूप है, वो झुक गया। और क्यों झुका? जनता के सामने झुका, जन आक्रोश के सामने झुका।
उनके लिए पंजाब का चुनाव इतना महत्वपूर्ण नहीं, अन्य राज्यों में चुनाव इतने महत्वपूर्ण नहीं है वो, उनके लिए यूपी महत्वपूर्ण है। यूपी में जनाक्रोश ने झुका दिया मोदी जी को, बैक ट्रैक कर लिया। पहला दृष्टांत है उनके पूरे कार्यकाल में, जो 7-7.5 साल का कार्यकाल रहा है, पहला दृष्टांत है जिसमें उन्होंने बैक ट्रैक किया है, क्लाइम डाउन किया, क्लाइम डाउन। और क्लाइम डाउन किया है, इसको बीजेपी के लोग पचा नहीं पा रहे हैं, जवाब देना मुश्किल हो रहा है, बहाने ढूंढ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ नेता बीजेपी के तो यहां तक कहते हैं कि ये यूपी चुनाव के लिए किया गया, खुल के कह रहे हैं, सीना ठोक के, और चुनाव जैसे ही खत्म होगा, चुनाव हम जीत गए, वापस ले आएंगे इनको, कर लो हमारा, क्या करते हो आप। चुनौती है ये किसानों के लिए। तो ये भद्दा मजाक। एक तरफ प्रधानमंत्री जी पूरे राष्ट्र के किसानों से माफी मांगते हैं कि मेरी तपस्या में कहीं कमी रह गई, मेरा जो दीपक जो जल रहा था उसकी लौ थोड़ी कम हो गई, या कुछ भी कहा उन शब्दों का आडंबर उनसे अच्छा कोई करता नहीं है, और माफी मांगता हूं पूरे रास्ते में। और दूसरी तरफ बीजेपी के नेता ये चैलेंज कर रहे हैं कि फिर वापस आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, अब देखिए, समझने की कोशिश करिए। उत्तर प्रदेश में जब से प्रधानमंत्री जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे रैली की, और वह रैली थी मनरेगा मजदूरों की, जिनको डीएम ने ढोके लाए, उनको दिहाड़ी दी गई, चाहे वो आजमगढ़ की है, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की है, चाहे वो महोबा की रैली है, ढो ढो के लाएगी क्राउड। स्वयं स्फुरित, स्वयं प्रेरणा से भीड़ नहीं आई। इसको बीजेपी समझ रही है, चतुर खिलाड़ी है वो राजनीति के, राजनीति से और कुछ करते नहीं है वो। गवर्नेंस उपेक्षित रहती है उनके, गवर्नेंस इश्यू नहीं है उनके लिए राजनीति इश्यू है, वोट इश्यू है। राम को भी वो मानते हैं राजनीति के लिए। जितने धर्म स्थल हैं, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, राष्ट्रवाद, ये सब राजनीति के लिए, उनके लिए, उनके टूल किट का हिस्सा है सब ये। तो वो पूर्वांचल एक्सप्रेस में रैली हुई, और रैली के अगले दिन अखिलेश यादव ने वो कर दिया जो सोचा नहीं था, मैंने भी नहीं सोचा था, आपने भी नहीं सोचा होगा, कि रात भर गाजीपुर से लखनऊ का उनका कारवां चलता रहा, भीड़ आती रही। और वो भीड़ किसकी थी? वो भीड़ उन लोगों की थी जो पीड़ित थे, प्रताड़ित थे, बेरोजगार लोग थे, बेरोजगार भाग रहे थे पीछे पीछे। उधर योगी जी प्रधानमंत्री की गाड़ी के पीछे भाग रहे थे अपना रोजगार बचाने के लिए, वो भी तो अपना रोजगार बचाने के लिए भाग रहे थे ना भागेंगे गाड़ी के पीछे, ना चाटुकारिता करेंगे तो मुख्यमंत्री का पद चला जाएगा। तो वो अपने रोजगार बचाने के लिए मोदी जी के पीछे दौड़ रहे थे। इसी तरह से बेरोजगार युवा अपना रोजगार पाने के लिए, जो मिला नहीं उनको रोजगार के बदले योगी जी की लाठी मिले, डंडे मिले, चेले मिली, मुकदमे मिले, वो भाग रहे थे अखिलेश यादव के पीछे। और उससे बीजेपी की चूल्हे हिल गई, पूरे संगठन की चूल्हे हिल गई कि भाई हमारे तो पन्ना प्रमुख तक का संगठन है, ऊपर तक का संगठन है, हमारे पास अमित शाह है, चाणक्य, हमारे पास नड्डा साहब है, महाचाणक्य अध्यक्ष, और मोदी जी का करिश्मा है, वो करिश्मा जो माफी मांगने के लिए मजबूर हुआ, वो करिश्मा है। उन्होंने क्या किया, जैसे ही खत्म। So besides the 71 war, the other problem is Nehru. When you're coming up to 2024, and essentially that's the 75th year of India's independence, the larger than life figure is Nehru. Obviously the trolls and the medias, especially Amit Malviya, are out there trying to denigrate Nehru. Unfortunately, people like Malviya are pygmies, and even pygmy is exaggerated and is doing justice to, even is kind of downgrading pygmy when you compare them to people like Amit Malviya. Absolutely not. Pygmies, including, I would go as far as say Nana and Shah, pygmies as far as Nehru is concerned, because the kind of troubles Nehru had to go through to build this nation, everybody knows that. These guys, on the other hand, are playing really hard to break it up in whichever fashion they can get. And Rahul is right when he says, Rahul, Hinduism isn't about hate. Hindutva is absolutely right. A lot of people out there to say. There was a lot of debate currently about how cussed the Congress was to miss the day of the celebration of the Constitution Day, rightly so, but equally cussed was what the BJP did. Ministers, presiding officers give Central Hall function on Nehru's birth anniversary a miss. I think that was equally bad. And let's just say, happy birthday, Panditji, as written by
Tavleen saying, unsurprisingly, there was as much poverty in India when Nehru became Prime Minister as when he died. She says, and yet on his birthday this year, I feel the need to remember the things that he gave India that more than compensated for the mistakes he made. India became free of colonial rule at a time when many other countries in Asia and Africa were shaking off the chains of colonialism. Most of them moved almost immediately from being enslaved by the colonial masters to being enslaved by dictators and military men. India did not, and this was not an accident but a conscious decision made by Nehru not to let this happen. He was so popular and so much taller than the political leaders of that time that had he wanted to cancel elections and become supreme leader like the guy who's trying to do currently, he would have done this easily. He chose not to, and he chose to ensure that elections were held regularly and that they were free. He chose to allow the handful of newspapers and magazines that made up the media in those times to criticize him freely and not charge them with sedition and treason, as increasingly happens in Modi's New India. It was because of his respect for the pillars that hold up democracy that its roots were able to go so deep. Hear this, so deep into India's soil that when his own daughter tried to become a dictator, she failed badly. Remember that, folks. Failed badly. It was a victory of democratic once more. When people saw democracy decay into dynastic politics and corruption, Nehru's heirs were replaced by the son of a Gujarati tea seller, Narendra Modi. It is India's great misfortune that after winning his second term, Modi has shown an inclination to see himself as some kind of supreme leader who has to remain above dissent and criticism. A new India has risen in which the voices heard loudest are those that praise the leader and those that confuse nationalism with worship of leader. Yep. This is why on his birthday of India's first Prime Minister, one of his most consistent critics finds that she has to praise him for what he did to make sure that democracy took deep roots in a country whose soil was not ready for it. And that, folks, is for all of you and me to remember. No matter how much you rewrite the history, your history, this is where it is at, and it is reality. And all its faults, Congress and this particular dynasty must take ownership. But at the end of the day, democracy is in trouble when inner party democracies fail, and that's happened both in the Congress and has happened even worse in the BJP. Jai Hind. राइट विंग का आईटी सेल, बीजेपी का आईटी सेल और उसके हेड अमित मालवीय कितने घटिया स्तर पर जा सकते हैं, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। और ये आज की बात नहीं है, ये हर साल की बात हो गई है। पहले लगता था इग्नोर करो कोई बात नहीं, लेकिन अब लगता नहीं आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये इतनी ज्यादा घटिया स्तर पर जो ये राजनीति करते हैं, जिसमें ये किसी की भी बहन, भांजी, उनके आसपास जो महिलाएं हैं उन तक की इज्जत नहीं करते हैं और उनके साथ खींची हुई तस्वीरों को 70 साल बाद इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि उनका भी कैरेक्टर असैसिनेशन हो, सिर्फ इसलिए कि आप लोग भ्रमित हो जाएं और इनकी अपनी राजनीतिक रोटियां चलती रहें। जरूर इसी तरह का सम्मान इनके घर में इनकी महिलाओं का ये लोग करते होंगे, इसीलिए ऐसी नजर से ये या तो देखना चाहते हैं या आपको दिखाना चाहते हैं। मैं आपको दिखा दूं, 14 नवंबर जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री का जन्मदिवस होता है। बचपन से लेकर बड़े होने तक हमने हमेशा यही जाना है कि इट्स कॉल्ड चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस, और बढ़िया निबंध, ऐसे ये सब लिखवाए जाते थे। कभी या किसी दूसरे इनके पॉलिटिकल ओपोनेंट का अगर कोई बर्थडे होगा, उस पर भी हमने इस तरह की तस्वीरें कभी अपने बचपन में नहीं देखी। एंड आई एम रियली सॉरी टू द प्रेजेंट जनरेशन, द यंग जनरेशन टुडे, कि आप लोगों को ऐसे बचपन में और ऐसे उस यूथ से गुजरना पड़ रहा है जब इस तरह की गंदगी आप लोगों के दिमाग में और ज्यादा भरी जाती है और कोई और नहीं करता, सत्ताधारी पार्टी का आईटी सेल ये सब चीजें करता है। ये तस्वीरें जरा देखिए, आप लोगों के सामने ये तस्वीरें इस तरह से दिखाई गई जैसे न जाने पंडित जवाहरलाल नेहरू किसके साथ हैं, कितनी अश्लीलता परोस रहे हैं। और हार्दिक पटेल का डीएनए देखिए, सेम यही रहा होगा। हार्दिक पटेल से उन्होंने इसलिए जिक्र किया कि उनकी जो एक सेक्स सीडी सामने आई थी, उससे उन्होंने इस तरह की तस्वीरों को रिलेट करके आपके दिमाग में क्या डालने की कोशिश की वो समझ लीजिए। अब जरा इस पूरी खबर का, इस थ्रेड का और ये जो तस्वीरें इन्होंने रखी हैं अमित मालवीय की ट्वीट का डीएनए जरा हम समझ लेते हैं। ये देखिए, अपनी बहन, अपनी भांजी के साथ के जो चेरिश्ड मेमोरेबल मोमेंट्स हैं या फिर फैमिली फ्रेंड के साथ हैं, वो इस तरह से आपके सामने रखे जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको इस बात से नफरत है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस तरह का भारत बना दिया जिसे आज आप चाहकर भी तोड़ नहीं पा रहे हैं, जिसमें आप, हम जैसे कितने लोग हैं जो कि आज भी अपना पुराना भारत लेने के लिए और अपना पुराना भारत जीवित रखने के लिए लड़ते रहते हैं। इन्हें इसी बात से आपत्ति है। आज जहां पर सज धज कर पूरे दुनिया भर में आप चले जाते हैं, मान सम्मान की बात करते हैं, वो भारत बनाया किसने? भारत के पहले प्रधानमंत्री अगर उस विजन के साथ देश को नहीं सींचते तो आज आपको जो सब कुछ बना बनाया मिल गया है ना, कुछ तो और करना नहीं है, इसलिए इवेंट चल रहा है।
मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही, ही स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच। आपको तो किसी तरह की भुखमरी का भी सामना नहीं करना पड़ रहा, सब कुछ आपको रिसोर्सेज के रूप में सब कुछ मिला हुआ है। फिर आप लोग कंगना रनौत जैसे या विक्रम गोखले जैसे लोगों से बुलवाते हैं और कोई आपको मिलता नहीं, इनसे आप बुलवाते हैं कि जी आज़ादी 2014 के बाद मिली। आप कहेंगे और हम मान लेंगे। ये तस्वीर देखिए।